energetic students. Hello, hello, how are you? So, welcome, welcome. So, are you ready to crack that NSEP exam? I can see with just 140 days to go, you are full of energy, full of josh, and I can feel that energy. Now, I get a lot of messages on Telegram, and I usually make these sessions based on the messages I get. And lately, I've been getting some messages like, 4 मंथ में क्या कर पाऊंगा सर? अब तो टाइम ही नहीं बचा। एंड अब स्टार्ट करूंगा तो टाइम वेस्ट होने वाला है सर, तो एक काम करता हूँ अगले साल ही देख लेता हूँ। ऑब्वियसली दीज आर नॉट द वर्बेटिम काइंड ऑफ, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, थोड़ा चेंज भी किया है इनको, बट दिस इज द जनरल सेंटिमेंट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स दैट आई एम गेटिंग कि भाई अब क्या उखाड़ लूंगा। फेयर इनफ बात है यार, अब क्या क्या उखाड़ लूंगा 140 दिन। So before I speak about that concern, let me introduce myself. My name is Bhavdeep Sethi and I have done masters from IIT Bombay. I have a passion for physics and a big, huge passion to teach physics in a simplified manner. And with that passion, I convert physics haters to physics lovers. Now, coming back to the main thing, but before first thing first, the dates have been announced. So the the NSEP exam is happening on the Sunday, 24th of November, सुबह 8:30 बजे। तो उस दिन को तो हटा देते हैं। तो 23rd नवंबर तक अगर मैं काउंट करता हूँ तो I have exactly 140 days from today. And the concern is fair. It's a valid concern कि भाई मैं क्या उखाड़ लूंगा यार, 140 दिन में क्या कर लूंगा मैं। So let's talk about it. So can you still make it? Now, if you're looking for a short and sweet answer, my answer would be yes. A big yes. Yes, 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 you can make it. So the question is, कैसे? And that's the point. कैसे? कैसे? So कैसे? चलो समझते हैं, आराम से फुर्सत से बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, समझते हैं कैसे. So basically, if let's say your concepts are fair, like average से थोड़ा ऊपर, and you're willing to work extra hard for next 140 days, then you can definitely make to top 300. Let's understand this statement क्योंकि इसमें काफी सारी conditions छुपी हैं. पहली कंडीशन तो है कि that you should be willing to work extra hard for next 140 days. ये नहीं कि चलो कर लूंगा मेहनत, नहीं, खूब 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 सारी मेहनत है ना. सो इफ यू आर विलिंग टू गिव दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क फॉर नेक्स्ट 140 days एंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. अभी कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर का क्या मतलब? इसका ये मतलब नहीं कि भाई 11 12 का पूरा फिजिक्स ही क्लियर है मेरे को तभी आप कर पाओगे. अरे अगर पूरा फिजिक्स क्लियर होता तो देन व्हाई आर वी इवन थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इन नेक्स्ट 140 days? क्योंकि फिर तो कल ही एग्जाम करा दो, कल ही फोड़ दूंगा. So when I say concepts are clear is what kind of student you are. So there are two types of students. Student number one, let's say he or she is studying free fall. अब रट्टा मार लिया. When the ball is thrown up, acceleration is negative. When the ball goes down, acceleration is positive. कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं, रट्टा मार लिया. Thermodynamics. When the temperature increases, delta U is negative. When the temperature, I don't know what I said, but let me repeat. So when temperature increases, delta U is positive. When temperature decreases, delta U is negative. Just blindly रट्टा मार लिया, कुछ सोचा नहीं, दिमाग लगाया नहीं. So that student, I would say, does not have concepts clear. But if you are a kind of student के क्वेश्चन करते हो भाई, समझते हो, अब याद भी करते होगे, मैं मना नहीं कर रहा, याद करने वाले में कोई बुराई नहीं है, बट व्हेन यू मेमोराइजिंग you're actually giving a thought कि क्या क्यों कैसे. So if that is the kind of student you are and you have an average से थोड़ा सा ऊपर concepts, I would say yeah, you fit this criteria. Then you have to go for extra hard work. Now if these two things are there, average से थोड़ा ऊपर concepts and then extra hard work for next 140 days, there is a chance that you will fit in top 300. अब 300 क्यों? क्योंकि NSEP exam is given by thousands of students. Out of those thousands of students, top 300 students qualify for the next level exam. So next level, then CAM, then next level and all that. So basically there are criteria where you qualify all those and then you go into Team India. The 5 students go to Team India, but that's at a later stage. But NSEP exam given by thousands of students, if you are in top 300, you qualify to go to the next level. So I'm saying if your concepts are fairly good and then you have a willingness to extra work hard, then definitely there's a high chance that you will make into top 300. But let's say you fall short. Let's say you do not qualify for being in top 300. अब क्या? 140 दिन मेहनत कर ली, अब क्या? Well,
इवन देन यू हैव ए चांस, वेरी हाई चांस आई वुड से, कि आप टॉप 1% स्टूडेंट हो गए अपने स्टेट में. सो दैट वाज अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस इंडिया, जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया उसमें टॉप 300 में आए तो आप नेक्स्ट लेवल पर गए. बट लेट्स से यू फॉल शॉर्ट, आपके नहीं आए, तो आप अपने स्टेट में देखिए. अगर आप अपने स्टेट में टॉप 1% स्टूडेंट्स में आते हो, यू गेट अ मेरिट सर्टिफिकेट. अब उस कागज के पन्ने का क्या करना है? अरे कागज का पन्ना नहीं है, इट हैज अ बिग वैल्यू. So if you take that certificate to a job interview, to a university interview, it speaks for your caliber. So it's not a kagaj ka panna, it's a huge merit certificate. So let's say you didn't qualify for that, then you have a high chance at least अपने state में तो top 1% में आओगे ही आओगे यार. Suppose उसमें भी नहीं आया, let's say you fall short कि आपका 1% में भी नहीं हुआ, तो let's recap what we said. So we started with the journey saying, if your concepts are fair enough and you are willing to work extra hard for next 140 days, there is a high chance that you will qualify in top 300 in the country. Then you go for the next level exams. And then the point was, what if I don't qualify there? Then the point is, okay, still you have a chance कि आप अपने state में 1% में आओगे, merit certificate ले लो. And that is a big prestigious certificate. But now the point is, let's say for whatever reason I do not qualify in top 1% of my state. फिर क्या फायदा 140 डेज की मेहनत का? आई मीन ऑनेस्टली, नहीं आ पाए तो आपका रिग्रेट क्या होगा? आप खुद सोचिए क्या रिग्रेट होगा. ओहो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए यार, अब ये क्या हो गया? नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी हियर, आई मीन सीरियसली थिंक अबाउट इट. क्या बोलोगे आप? अरे यार, इतनी मेहनत करी, 140 दिन, रोटेशनल मोशन एकदम क्लियर हो गया मेरे को, थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया, मैं 10th में हूं, मेरे क्लासमेट्स हाफ ईयरली 10th का पोर्शन पढ़ रहे हैं, मेरे को तो मॉडर्न फिजिक्स आ गया, मेरे को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, ओहो ये क्या हो गया? सीरियसली आप ये बोलोगे क्या? है ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर. सो लेट्स से फॉर वट एवर रीजन यू डोंट क्वालिफाई इन टॉप 1% in your state, still think about what you gained in this 140 days of hard work. You gained a conceptual clarity, and that is going to help you in any exam, JEE हो, नीट हो, ISI हो, कोई भी एग्जाम आप दोगे हेल्प करेगा. तो आपने क्या खोया? कुछ भी नहीं खोया यार, तो आपने तो पाया ही पाया है. सो माय पॉइंट इज कि अब तैयारी शुरू करो, अभी से करो, राइट नाउ स्टार्ट करो. क्या है खोने के लिए? कुछ भी नहीं है. पाने के लिए बहुत कुछ है. मेडल मिलने के चांस है, नहीं मिला तो सर्टिफिकेट मिलने के चांस है, नहीं मिला तो गारंटेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है. कर्म तो करो यार, फल तो गारंटी मिल रहा है, यहाँ पर गारंटेड फल मिल रहा है. सो यस, तैयारी अभी से करो. अब जब तैयारी की बात आती है, यूजुअली टॉक अबाउट दीज टू ऑप्शंस. There are free resources, awesome resources like Vedantu Olympiad School का YouTube channel है, free resources. Then there are paid courses which are usually considered costly, है ना? So choice is yours obviously, but if you are willing to prepare yourself, if you are deciding to free वाले resources, तो good news is starting next week I'm bringing on this YouTube channel PYQ series on this Olympiad School. तो पहली बात तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, अभी लाइक करो, मैं वेट कर रहा हूँ, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो. So the point is, from next week, I'm going to take the previous year questions of NSEP chapter by chapter and start solving them here. So stay tuned here. But there is a better option here also. So Vedantu is giving you best of both worlds. So paid courses are usually thought about it, बहुत पैसा लगता है. We are bringing you courses that are not very expensive. By the way, this is my Telegram ID. So feel free to contact there. I reply to every student. ये नहीं कि वेदांतु के स्टूडेंट है उनको, सबको. I reply to every student. If required, I call also. So I'm bringing you best of both worlds. So where we have a paid course, it has been divided into 5 modules. These are the 3 modules which cover 11th ka portion, and then these are the 2 modules that cover 12th ka portion. So there are total 5 modules का course जिसमें NSEP का पूरा full coverage हो जाना है. अब ऑब्वियसली लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स कि 140 दिन में आप क्या रियली में सोचते हो कि ये भी करा दूं, मैं ये भी करा दूं, तो वो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली. तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि मैं कोर्स है विच इज स्टार्टिंग ऑन 15th of July, दैट इज NSEP 2024 फुल 12th ग्रेड सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस, मतलब लास्ट के 2 मॉड्यूल्स जो थे 4th and 5th, 12th का सिलेबस लाइव, बोनस, फ्री फ्री फ्री. 11 का जो सिलेबस था 1 2 3 मॉड्यूल, वो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इतना तो कवर नहीं कर सकते, बट उसकी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने बाकी बैच में किया हुआ है फ्री में दे रहा हूँ. दैट एक्चुअली इज अ पेड काइंड ऑफ थिंग. आई विल गिव इट टू यू फॉर फ्री, क्योंकि मेरे को पता अगर आप 12th का सिलेबस लेके फुल एनर्जी लगा रहे हो, तो जो भी आपका फ्री टाइम अवेलेबल होगा, मे बी वीकेंड्स और सम आवर्स यू आर फ्री, आप वहां पर रिकॉर्डिंग देख लोगे.
Talking about price here, price is every module is priced for 2500 rupees. So क्योंकि यहाँ दो मॉड्यूल में लाइव दे रहा हूँ तो 2500 times 2 is 5000 rupees. But there is a 10% coupon, नीचे आप लिंक देख लीजिए, तो आपको 4500 का पड़ेगा only. But then you are also getting these free recordings. So 4500 में I'll be taking these two live and then वो free में आपको मिल जाएगा. Now there is an assignment after every class. You'll be part of a Telegram group where you can ask the doubts and participate with discussions with fellow जोश वाले students. Every other Sunday को test होगा. There is another option that you have. So let's say you're thinking for a longer vision. You have a longer vision and you say 140 दिन मेहनत करूंगा, इस साल एनएसईपी दूंगा, अगले साल पूरा डबल जोश से दूंगा. तो फॉर यू देयर इज अ लॉन्ग टर्म बैच. और मे बी यूर ए 9th ग्रेडर जो अभी दे ही नहीं सकते. 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स इस साल नहीं दे सकते, वो अगले साल 10th में आएंगे तब देंगे. तो उनके लिए भी ये फिट होता है. और बाकी के स्टूडेंट्स भी जो कह रहे हैं अभी मैं 140 दिन मेहनत करके दूंगा और अगले साल डबल जोश से दूंगा, आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच है फुल फिजिक्स मास्टरी 2025 विच विल कवर लाइव ऑल द 5 मॉड्यूल्स. दोनों में सर्विसेज सेम है, like assignment after each class, part of being a Telegram group where you can ask doubts and discuss with your fellow classmates, Josh wale classmates, है ना? And then you get alternate Sunday test, everything. The difference here is I'm going to cover only 2 modules here live. So course starts on 15th of July, ends in October 2024. उसके बाद हम doubt clearing और extra practice के sessions करेंगे एग्जाम के डे से थोड़ा पहले तक. ये वाला कोर्स अभी जून जुलाई में शुरू होगा लेकिन अक्टूबर 2025. लुक एट द डिफरेंस 2024 एंड दिस इज 2025 बिकॉज ऑल द 5 मॉड्यूल्स आर स्लो एंड स्टडी पेस से जाएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से. सो अक्टूबर तक क्लासेस चलिए, इनफैक्ट नवंबर तक एग्जाम के पहले तक पूरा सपोर्ट मिलेगा. सो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट यू हैव. Now, the question obviously is there any prerequisite for these courses? I always say there are 3 prerequisites. One is the willingness to learn, second is the commitment to hard work, and third is Josh. क्योंकि अगर ये 3 नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो, सीखने वाले तो बनो, मैं सिखा दूंगा, है ना? दैट्स द पॉइंट. सो इफ दीज आर द 3 prerequisites. नाउ समटाइम्स स्टूडेंट्स think कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो देयर इज अ टेस्ट ड्राइव, गाड़ी लेने जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, तब खरीदते हैं. वही ऑप्शन है यहाँ पर. There was a summer camp that I had started in June. So it had 4 classes, differentiation and integration के लिए. So I'm giving it to you for free. Obviously the recording of that. So link नीचे लिखा है. इसका भी लिंक है सारे कोर्सेज का जो फुल मास्टरी था. अच्छा मैं एक मिनट प्राइसिंग की बात करना भूल गया यहाँ पर. ये 4500 का पड़ेगा आपको, बट बिकॉज देर आर 5 modules are live, so 2500 times 5 is 12,500. But there is a link for 20% discount. So this will be only for 10,000. 10,000 में सब कुछ, assignment, test, everything, doubt clearing, और कुछ नहीं है, सब कुछ है. Now, before you buy these, maybe if you want to try, then this is the option you have. It is free. इसका भी लिंक नीचे लिखा हुआ है. आप ले लो, अभी ले लो, अभी right now recordings मिल जाएंगे आपको. तो आप लेके ट्राई कर लो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बैठ के रिकॉर्डिंग्स देख लो. ये 5 hours की रिकॉर्डिंग है बाय द वे. So 75 minutes each class. So you sit down, watch these recordings, and then decide to buy one of those 2. Now Dhruv trusted himself, he was committed, and he made us proud in 2023 International Physics Olympiad. He was part of Team India, and we got a gold medal, obviously. And then Aditi and Avnish, silver medal in chemistry, International Olympiad. As we speak, there are 5 students who are competing at the international stage from Vedantu. And यही नहीं है, मतलब दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है. इतनी स्लाइड बनाऊंगा तो बहुत लंबी सेशन जाएगा. But couple of weeks back, there was the announcement of ISI results, prestigious ISI results. Top 10 में 4 students from Vedantu Olympiad School. So my point is, when you're preparing that extra level for Olympiads, आप सिर्फ ओलंपियाड की नहीं तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बाकी एग्जाम भी इजी हो जाते हैं. तो ये जो 140 दिन की मेहनत है सिर्फ ओलंपियाड के लिए नहीं है. इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन जेईई, आईएसआई, एनएसईपी, नीट, एनी एग्जाम यू गिव. एंड टॉप 10 में लाइक रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So stay tuned here. You get updates here. And this is my Telegram ID. If you have any questions, any concerns, you contact me. I reply to every student. And whether or not you're coming to the paid courses, free courses, or no courses, one thing I always say, keep up the high जोश. जोश में कमी नहीं आनी चाहिए. So good luck students. पूरा 140 दिन की मेहनत, कड़ी मेहनत से आपको सब कुछ मिलने वाला है यार. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं. तो चलिए लग जाते हैं. गुड लक.